Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, S.P.C Government College, अजमेर। बच्चों, मेरे आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को क्लोनिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। क्लोनिंग क्या होती है? What is the definition of cloning? Cloning is the process of generating a genetically identical copy of a cell और एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म और सेल की बिल्कुल एक सी कॉपी, जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपी बनाने को हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोनिंग एंड क्लोन? क्लोनिंग इज अ प्रोसेस and term clone refers to the identical twins which are produced by the process of cloning. Our body has certain cells called stem cells which can differentiate into certain specific tissues and cell. हमारी कोशिकाओं के शरीर के अंदर स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो किसी भी प्रकार की विशिष्ट तरह की कोशिकाओं के अंदर रूपांतरित होती रहती हैं. This also explains that the body consists of committed as well as uncommitted cells. इस तरह से हमारे शरीर में दो तरह की कोशिकाएं, एक तो कमिटेड सेल्स और दूसरा अनकमिटेड सेल. दोनों सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है? अनकमिटेड सेल्स जो होती हैं, दे हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट एंड मैच्योर इनटू एनी सेल इन कॉन्ट्रास्ट टू द कमिटेड सेल्स. अनकमिटेड सेल किसी भी सेल के अंदर रूपांतरित हो सकती हैं, जबकि कमिटेड सेल्स जो होती हैं ये केवल एक स्पेसिफिक टिश्यू या स्पेसिफिक सेल के अंदर ही रूपांतरित होती हैं. इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एवरी डे about 10,000 crore red blood per intestinal cells and 1.5 grams of epidermal cells are lost. ह्यूमन बीइंग के अंदर इतनी कोशिकाएं जो वो हमेशा लॉस होती रहती हैं. अगर इतनी कोशिकाएं लॉस होती रहती हैं तो उनका रिप्लेसमेंट कहाँ से आता है? द सेल्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ सच लॉसेस come from the cell known as stem cell. ये रिप्लेसमेंट स्तंभ कोशिकाओं के द्वारा होता है. There are two major characteristics of stem cell. Stem cell स्तंभ कोशिकाओं की दो विशेषताएं होती हैं. कौन कौन सी? एक तो सेल्फ रिन्यूअल और दूसरा डिफरेंशिएशन. Stem cells are generally टोटीपोटेंट. स्तंभ कोशिकाएं कैसी होती है? टोटीपोटेंट. टोटीपोटेंट कोशिका कौन सी होती है? टोटीपोटेंट कोशिका वो कोशिका होती है विच कैन मॉडिफाई इनटू are numerous types of cell, or totipotent cells can form all types of cells in the body plus the extra embryonic or placental cells. Embryonic cells within the first couple of cell divisions after fertilizations are the only cells that are टोटीपोटेंट. जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके अंदर कुछ फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ ही कोशिकाएं जो होती हैं वो टोटीपोटेंट होती हैं, बट कैन ऑल्सो बी यूनिपोटेंट. यूनिपोटेंट मीन्स विच कैन गिव राइज टू ओनली वन टाइप ऑफ सेल. कुछ समय बाद वो यूनिपोटेंट हो जाती हैं. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंस दे आर टोटीपोटेंट. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कैसी होती है? टोटीपोटेंट या बहुसक्षमी, जो कि किसी भी तरह की कोशिका में रूपांतरित हो सकती हैं. इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्टेम सेल्स which are generally pluripotent, the progenitor cells and the precursor cells are also present. इस स्तंभ कोशिका के अलावा दो तरह की कोशिकाएं और पाई जाती हैं. एक तो होती है प्रोजिनेटर सेल और दूसरी होती है प्रिकर्सर सेल. प्रोजिनेटर सेल कौन सी होती है? प्रोजिनेटर सेल रेफर्स टू अ पार्शियली कमिटेड cell which is committed partially. दूसरी होती है precursor cells are those which are restricted in their potential and differentiate later into one organ. In nature, some plants and single-celled organisms called as such as bacteria produces genetically identical offspring through a process कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो सिंगल सेल्ड एनिमल होते हैं नेचर के अंदर या कुछ एक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर अलैंगिक जनन के द्वारा आइडेंटिकल क्लोन बनाने की प्रक्रिया होती है. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ न्यू इंडिविजुअल इज जनरेटेड फ्रॉम अ कॉपी ऑफ सिंगल सेल फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म. द टर्म क्लोनिंग डिस्क्राइब a number of different processes that can be used to produce genetically identical copies of a biological entity. The copied material which has the same genetic makeup
as the original is referred to as a clone. Researchers have cloned a wide range of biological materials, including genes, cells, tissues, and even entire organism such as a sheep. मतलब रिसर्चर्स ने तो कोशिकाएं, टिश्यू, इसके अलावा के पूरा एंटायर ऑर्गेनिज्म का ही क्लोन बना लिया, जैसे कि शीप है. नेचुरल क्लोन्स, ऑल्सो नोन एज आइडेंटिकल ट्विन्स, occur in humans and other mammals. These twins are produced when a fertilized egg splits, creating two or more embryos that carry almost identical DNA. Identical twins have nearly the same genetic makeup as each other, but they are genetically different from either parent. देखिए क्लोन में और ट्विंस में क्या डिफरेंस है. नेचुरल ट्विंस और क्लोन में क्या डिफरेंस है कि नेचुरल ट्विंस के अंदर वो दोनों ट्विंस तो एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, परंतु वो अपने किसी भी एक पेरेंट से भिन्न हो सकते हैं, जबकि क्लोन जो होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट की कॉपी होते हैं. स्टेम सेल्स form an important part of cloning, which is the process of producing similar populations of genetically identical individuals that occur in nature. It is referred to the process used to create copied of DNA fragments or cells or organisms. Clones are the exact genetic copies. They can happen naturally or in vitro. क्लोन्स जो है वो नेचुरली भी हो सकते हैं और इन विट्रो का मतलब आर्टिफिशियली भी हो सकते हैं. टर्म क्लोन, KLON, क्लोन is a Greek word meaning twig and refer to a process whereby a new plant can be created from a twig. Cloning can also be referred to as the asexual form of reproduction, where the offsprings are exactly similar to the parent and all are similar too. In plants, grafting is a form of cloning by which many new exactly similar forms can be created from a plant, but in animals, cloning remained a matter of curiosity and concern. S.P.C, a German embryologist, in his work from 1869 to 1941, he experimented on salamander and sea urchin and discovered embryonic induction. इसमें मैं इसने इंडक्शन की थ्योरी दी थी, भ्रूणीय उत्प्रेरण की सिद्धांत दिया था. In 1928, Hilde Mangold performed somatic cell nuclear transfer using amphibian embryos. In 1953, Robert Briggs and Thomas King transfer of nucleus from an embryo, tadpole embryo, into an enucleated frog egg. The resulting cell developed into a tadpole. In 1958, John Gordon developed nuclear transplant technique in frog, where the nucleus of a tadpole intestinal cells was transplanted into an enucleated frog egg. The experiment showed that nuclei from somatic cells in a fully developed animal could be used for cloning. Now next, in year 1975, direct transfer of the nucleus from the rabbit embryo cell into an enucleated rabbit egg cell, showing that the mammalian embryos could be created by nuclear transfer. इस nuclear transfer technique में क्या करते हैं, एक तो enucleated करते सेल को, उसका न्यूक्लियस निकाल लेते हैं, और दूसरा क्या करते हैं कि डोनर का जो अपने को है जो न्यूक्लियस है वो अपन किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, सरोगेट मदर के अंदर. In 1996, Dolly, a sheep, was created by Professor Ian Wilmot. आपने सुना होगा ना, डॉली शीप हुई थी, क्लोन का निर्माण हुआ था 1996 में, और ये किसने दिया था, प्रोफेसर इयन वेलमुट. शी वॉज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू एन अडर सेल. अडर होते हैं थन,
वो कैसी थी? बिल्कुल जैसी कोशिकाओं से उसको लिया गया था. द न्यूक्लियस ऑफ विच हैड बीन ट्रांसप्लांटेड इनटू एन एग from a second sheep and inserted into the third sheep and then a fourth to develop a lamb. Since then, many similar have been successfully cloned using techniques like SC&T, somatic cell nuclear transfer. Some of them are cows, goats, pigs, mice, and monkeys. How are the gene cloned? जीन की क्लोनिंग किस तरह से होती है? Researchers routinely use cloning techniques to make copies of genes that they wish to study. The procedure consists of inserting a gene from one organism, often refers to as foreign DNA, into the genetic material of a carrier called a vector. इसमें अपन क्या करते हैं? जीन्स क्लोनिंग में क्या करते हैं? एक जीन, जिस ऑर्गेनिज्म से हम जीन्स ले रहे हैं उसको तो हम कहते हैं फॉरेन डीएनए, और जिसके अंदर हम उसको जीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो कैरियर है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर. एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो जीन्स को लेके जाते हैं? वो हैं बैक्टीरिया, यीस्ट सेल, वायरसेस और प्लाज्मिड्स, विच आर स्मॉल डीएनए सर्कल्स कैरीड बाय बैक्टीरिया. After the gene is inserted, the vector is placed in the laboratory conditions that prompt it to multiply, resulting in the gene being copied many times over. अब जब बैक्टीरिया के अंदर आपने फॉरेन डीएनए को ट्रांसफ़र कर दिया, फिर इसको लेबोरेटरी कंडीशंस में रख लेंगे और वहाँ पर ये अपनी नॉर्मल कंडीशंस के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, रिजल्टिंग इन द जीन बीइंग कॉपीड मैनी टाइम्स ओवर. Now we'll see the types of cloning. There are basically 3 types of cloning, which are referred to as number 1 gene cloning, number 2 reproductive cloning, and number 3 is the therapeutic cloning. First of all, we'll see the gene cloning. What is gene cloning? As the name indicates, cloning of the genes. It produces copies of genes, DNA, chromosomes, which are exactly similar to each other. Each copy is known as clone. Gene cloning can be carried out by polymerase chain reaction or PCR machine or the gene machine. Now, how are animals cloned? What is reproductive cloning means? In reproductive cloning, researchers remove a mature somatic cells सच एज अ स्किन सेल. इसमें क्या करते हैं कि इसमें से मैच्योर सोमेटिक सेल्स को निकाल लेते हैं, कायिक कोशिका को निकाल लेते हैं, जैसे स्किन सेल फ्रॉम एन एनिमल दैट दे विश टू कॉपी. जिसको कॉपी करना है उसकी कायिक सेल को निकाल लेते हैं. देन दे ट्रांसफर दिस सोमेटिक सेल, ट्रांसफर द डीएनए ऑफ द डोनर एनिमल सोमेटिक सेल इनटू एन एग और ओसाइट दैट हैज़ हैड इट्स ओन डीएनए कंटेनिंग न्यूक्लियस रिमूव्ड. जिसका एक ऐसा सेल जिसका अपन ने एग रिमूव कर दिया. मैं इन्यूक्लिएटेड टर्म यूज़ कर रही हूँ. इन्यूक्लिएटेड का मतलब रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस. किसी के अंदर से न्यूक्लियस रिमूव कर दिया और दूसरे का अपन उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करेंगे. रिसर्चर्स कैन ऐड द डीएनए फ्रॉम द सोमेटिक सेल्स टू द एम्प्टी एग इन 2 different ways. In the first method, they remove the DNA containing nucleus of the somatic cell with a needle and inject it into the empty egg. एक में तो क्या करते हैं, निडल की सहायता से डीएनए न्यूक्लियस को सोमेटिक सेल को इंजेक्ट कर देते हैं एम्प्टी एग के अंदर. और दूसरी जो टेक्निक है उसमें क्या करते हैं, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्यूज द एंटायर सोमेटिक सेल विद द एम्प्टी egg. In both processes, the egg is allowed to develop into an early stage embryo in the test tube and then it is implanted into the womb of an adult female animal. दोनों ही प्रोसेस के अंदर एग को जो होता है वो हम उसको टेस्ट ट्यूब में ही डेवलप होने देते हैं, और जब इसके अंदर जब डेवलप हो जाता है, कुछ सेल स्टेज का हो जाता है, तो उसके अंदर फिर सेरोगेट मदर के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं. अल्टीमेटली द एडल्ट फीमेल गिव बर्थ टू एन एनिमल दैट हैज़ द सेम जेनेटिक मेकअप एज द एनिमल दैट डोनेटेड द सोमैटिक सेल. This young animal is referred to as a clone. Reproductive cloning may require the use of a surrogate mother to allow development of the cloned embryo, as was the case for the most famous
cloned organism, Dolly the sheep. Now in this picture you can see the formation of the Dolly sheep. कैसे हुआ था निर्माण? मैंने दो मेथड अभी आपको समझाए थे. एक तो मैंने बताया था कि या तो हम डोनर सेल्स को रिमूव कर लेते हैं. अब इसके अंदर जो एडल्ट फिन डॉर्सेट ईव है, ये न्यूक्लियस डोनर है. इसके थन के अंदर, इसके अडर के अंदर से हमने सेल्स को रिमूव कर लिया मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर से. ये डोनर सेल है, नॉर्मल ग्रोथ साइकिल. फिर डोनर सेल दे गॉट स्टार्व्ड, then they are put into the low nutrient culture media. Now here you can see the donor cell with the arrested growth cycle. अब इसको हम क्या करेंगे, डोनर सेल को, एक हमने इन्यूक्लिएटेड सेल यहाँ पे हमारे पास है, एक शीप है, उसके एग के अंदर से हमने ये माइक्रोपिपेट की सहायता से इसका एग निकाल लिया है. अब जो दूसरा जो हम जिसका हमें डालना है न्यूक्लियर मटेरियल, उसको हम इसके साथ में फ्यूज़ कराएंगे. ये दूसरा मेथड जो है वो इलेक्ट्रिक पल्स मेथड जो मैं आपको बता रही थी. सेल का फ्यूजन कराएंगे, फिर सेल के फ्यूजन करने के बाद में इसमें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, सेल डिवीजन होगा, सेल डिवाइड होगी, 4 से 6 सेल बनेंगी, 6 से 8 सेल बनेंगी और मल्टीप्लाई कर जाएंगी और फिर एम्ब्रियो बन जाएगा. जब ये एम्ब्रियो बन जाएगा तो इस एम्ब्रियो को हम अब क्या करेंगे, आर्टिफिशियल में ग्रो करके, और इस एम्ब्रियो को हम ट्रांसप्लांट कर देंगे सरोगेट मदर के अंदर. और इससे जो क्लोन बना है ये है फिन डॉर्सेट लैम या डॉली. थैंक यू.